I still remember how suffocated I felt, and how my heart broke while reading the story of the 10-year-old IDP girl who was kidnapped and gang-raped just after her family fled a flood-hit village in Sindh to dwell on a footpath last October. Maybe, the family would have decided not to flee the devastating floods had they known the horrible lifelong pain their daughter would suffer. Unfortunately, Pakistan has seen a surge in cases of gender-based violence, including sexual violence, in recent years. There are women heroes who have brought the perpetrators to court. The bright side of this story is that these women championed speaking up and not giving up their rights, but the sad side is the multiplied pain they went through. Too many women in Pakistan, and elsewhere, are exposed to different types of sexual violence every day. These inhumane, unfair and ugly acts should stop forever. The most recent statistics show that at least 1/4 of women from 15 to 49 years in Pakistan have experienced physical violence. The numbers still do not paint the complete picture, as a lot of underreporting can be expected, but the stories of the survivors do. The number of women and girls who have survived sexual violence in Pakistan is 6%. Women and girls with disabilities are 3 times more likely to experience sexual violence. The risk of sexual violence also escalates during conflicts and humanitarian settings as women and girls move to temporary shelters, and health and protection services are disrupted. Sexual violence takes place anywhere, by anyone, and in many forms: at home, at the workplace, in public transport, markets and streets, at refugee and IDP camps, and educational institutions. It can be committed not only by strangers but also intimate partners, relatives, family members, neighbors, co-workers, and service providers. It includes, but is not limited to, child sexual abuse, incest, rape, sexual exploitation, online sexual abuse, and non-contact sexual abuse. It is not only a heinous crime but a blatant violation of human rights. It should never be overlooked and excused. In fact, it should not happen at all. Therefore, the response to such crimes should be comprehensive, everywhere and at any time. Only response and prevention can end sexual violence. Sexual violence brutalizes bodies, scars minds, instills a feeling of insecurity and stigma in survivors and their families, and tears down the social fabric if condoned. Survivors often suffer from various mental health problems, isolation, depression, and anxiety. They can also contract HIV or other sexually transmitted diseases. Further, there is the economic toll that the survivors bear, and society pays in the form of lost human capital. Research shows that survivors of sexual violence experience lifelong economic disadvantages from anxiety and post-traumatic stress disorder. Survivors are also susceptible to giving up their education and economic careers. Putting a full stop to sexual violence is only possible through response and prevention. An efficient response program ensures that survivors receive confidential and quick support with legal advice, fair medico-legal services, and speedy trials. Psychosocial support helps survivors fight stigma and shame, and economic opportunities help them settle back into their lives. A well-coordinated response needs law enforcement, health and judicial services in place, without which lengthy trials, delayed investigations, gaps in evidence, and insensitive officers and prosecutors add to the survivor's ordeal. The road to the prevention of sexual violence is a winding one, yet it is the right path. One of the key milestones is information, education, and awareness among both men and women. This is why the UNFPA launched a global campaign on bodily autonomy and body rights to advocate for information and services and empower women and girls to make informed choices. Early investment in adolescence can bear long-term fruit. UNFPA supports life skills-based education as a primary prevention approach since it helps cultivate positive attitudes and healthier values in adolescence, which sets the foundation for nonviolent relationships. An action-oriented guide such as the recently launched Federal Response Framework for Cases of Sexual Violence is a commendable step from the government of Pakistan, as it has a map of actions for law enforcement, judiciary, health, and other government departments to prevent and handle cases of sexual violence.
The enactment of the Anti-Rape, Investigation and Trial Act, 2021, with investigation rules, trial procedures, crisis cells and medical legal rules will ensure safety, dignity and freedom for women and girls who can then fulfill their destiny and contribute productively to the economy and society. The writer is representative of UNFPA in Pakistan. Published in Dawn, April 6, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मुझे अब भी याद है कि मुझे कितना घुटन महसूस हुई थी और किस तरह मेरा दिल इस 10 साला आईडीपी लड़की की कहानी पढ़कर टूट गया था, जिसे गुज़िश्ता अक्टूबर में सिंध के सैलाबज़दा गांव से फरार होने के फौरन बाद अगवा और इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाया गया था। हो सकता है इस फैमिली ने तबाहकुन सैलाब से फरार न होने का फैसला कर लिया होता अगर उन्हें मालूम होता कि उनकी बेटी को जिंदगी भर के खौफनाक दर्द का सामना करना पड़ेगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हालिया बरसों में जिनसी तशद्दुद समेत सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखा गया है। ऐसी ख़वातीन हीरो हैं जिन्होंने मुजरिमों को अदालत में लाया है। इस कहानी का रोशन पहलू यह है कि उन ख़वातीन ने अपने हुकूक से दस्तबरदार न होने की आवाज़ बुलंद की, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि वो कई गना दर्द से गुजरी है। पाकिस्तान और दीगर जगहों पर बहुत सी ख़वातीन को हर रोज़ मुख्तलिफ किस्म के जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये गैर इंसानी, गैर मुनसिफाना और घिनौनी हरकतें हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। ताज़ा तरीन अदाद शुमार से पता चलता है कि पाकिस्तान में 15 से 49 साल की कम अज़ कम 1/4 ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। अदाद शुमार अब भी मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करते हैं, जैसा कि बहुत कम रिपोर्टिंग की तवक्को की जा सकती है, लेकिन जिंदा बच जाने वालों की कहानियां ज़रूर हैं। पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद से बच जाने वाली ख़वातीन और लड़कियों की तादाद 6% है। माज़ूर ख़वातीन और लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का सामना करने का इम्कान 3 गुना ज़्यादा होता है। जिनसी तशद्दुद का ख़तरा तनाज़ात और इंसानी बुनियादों पर होने वाली सरगर्मियों के दौरान भी बढ़ जाता है, क्योंकि ख़वातीन और लड़कियां आर्ज़ी पनागाहों में मुंतकिल हो जाती हैं और सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात में खलल पड़ता है। जिनसी तशद्दुद कहीं भी, किसी के ज़रिया और कई शक्लों में होता है, घर पर, काम की जगह पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाज़ारों और गलियों में, पनागज़ीनों और आईडीपी कैंपों और तालीमी इदारों में। ये न सिर्फ अजनबियों बल्कि करीबी शिराकतदारों, रिश्तेदारों, ख़ानदान के मेंबरों, पड़ोसियों, साथी कारकुनों और खिदमात फराहम करने वालों के ज़रिया भी किया जा सकता है। इसमें बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, ज़िना, इस्मत दुरी, जिनसी इस्तेहसाल, ऑनलाइन जिनसी इस्तेहसाल और गैर राब्ता जिनसी इस्तेहसाल शामिल हैं, लेकिन इस तक महदूद नहीं है। ये न सिर्फ एक घिनौना जुर्म है बल्कि इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और मुआफ़ नहीं किया जाना चाहिए। दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस तरह के जराइम का जवाब हर जगह और किसी भी वक्त जामे होना चाहिए। सिर्फ रद्द-ए-अमल और रोकथाम ही जिनसी तशद्दुद को ख़त्म कर सकती है। जिनसी तशद्दुद जिस्मों को बेरहमी से निशाना बनाता है, ज़हनों को दागदार करता है, जिंदा बच जाने वालों और उनके अहल खाना में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदनामी का एहसास पैदा करता है, और अगर मुआफ़ कर दिया जाए तो समाजी ताने बाने में आंसू आ जाते हैं। जिंदा बच जाने वाले अक्सर मुख्तलिफ ज़हनी सेहत के मसाइल, तन्हाई, अफसुर्दगी और इज़्तिराब का शिकार होते हैं। वो HIV या जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली दीगर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। मज़ीद बरां, जिंदा बच जाने वालों को जो माशी नुकसान उठाना पड़ता है और मुआशरा खोए हुए इंसानी सरमाए की शक्ल में अदा करता है। तहकीक से पता चलता है कि जिनसी तशद्दुद से बच जाने वालों को इज़्तिराब और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जिंदगी भर माशी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। जिंदा बच जाने वाले अफराद भी अपनी तालीम और माशी करियर को छोड़ने के लिए हसास हैं। जिनसी तशद्दुद को मुकम्मल तौर पर रोकना सिर्फ रद्द-ए-अमल और रोकथाम के जरिए ही मुमकिन है। एक मुअस्सर रद्द-ए-अमल प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाता है कि बच जाने वालों को कानूनी मशवरा, मुनसिफाना मेडिको लीगल सर्विसेज और तेज़ रफ्तार ट्रायल्स के साथ खुफिया और फौरी मदद मिले।
नफसियाती और समाजी मदद बच जाने वालों को बदनामी और शर्मिंदगी से लड़ने में मदद करती है और माशी मौक़े उन्हें अपनी ज़िंदगी ओहे में वापस आने में मदद करते हैं। एक मजबूत रद्द-ए-अमल के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों, सेहत और अदालती खदमात की ज़रूरत होती है, जिसके बगैर तवील ट्रायल्स, ताख़ीर से तहक़ीक़ात, शवाहिद में खला और बेहिस अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। जिनसी तशद्दुद की रोकथाम का रास्ता एक गंभीर रास्ता है, फिर भी ये सही रास्ता है। एक अहम संग मील मर्दों और ख़वातीन दोनों में मालूमात, तालीम और आगाही है। यही वजह है कि UNFPA ने मालूमात और खदमात की वकालत करने और ख़वातीन और लड़कियों को बाखबर इंतखाब करने के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए जिस्मानी खुदमुख्तारी और जिस्मानी हुकूक पर एक आलमी मुहिम शुरू की। नौमरों में इब्तदाई सरमायाकारी तवील मुद्दती नताइज दे सकती है। UNFPA बुनियादी रोकथाम के नुक्ता नज़र के तौर पर ज़िंदगी की महारत पर मबनी तालीम की हिमायत करता है, क्योंकि ये नौजवानों में मुस्बत रवैयों और सेहतमंद अक़दार को फ़रोग़ देने में मदद करता है, जो गैर मुतशद्दिद ताल्लुकात की बुनियाद कायम करता है। जिनसी तशद्दुद के केसेस के लिए हाल ही में शुरू किया गया फेडरल रिस्पांस फ्रेमवर्क हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक काबिल सिताइश कदम है, क्योंकि इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदलिया, सेहत और दीगर सरकारी महकमों के लिए जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम और उनसे निमटने के लिए इक़दामात का नक्शा मौजूद है। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 का नफाज, तफ्तीशी कवायद, ट्रायल के तरीक़ाकार, क्राइसिस सेल और मेडिको लीगल कवानीन के साथ ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और आज़ादी को यकीनी बनाएगा, जो फिर अपनी तकदीर को पूरा कर सकेंगी और मईशत और मुआशरे में मुफीद किरदार अदा कर सकेंगी। मज़मून निगार पाकिस्तान में UNFPA के नुमाइंदे हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 6 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.